Hello everyone. In this video, we will discuss about the process modeling and simulation course, that why we need to study this course. What are the benefits of this course? What is process modeling and simulation? What are the benefits which we get after studying this course in our practical life? So I will first take you to the basic definitions of modeling and simulation. Modeling is the act of building a model. But which one is the model? A pump, compressor, valve, reactor, distillation column, etc. Obviously, you know that a model means an equipment, and to build it using a software is known as modeling. Like in Aspen Custom Modeler, I am giving you an example of a software in which you enter different equations, for example, of a membrane or a reactor, which is not available in the library of Aspen, and we use the equations to develop a unit operation or a unit process. So the act of building a model based on the equations is known as modeling. And a simulation is a process of using this model to study the behavior and performance of an actual or theoretical system. Let me explain you a bit in Urdu कि मॉडलिंग में क्या होता है कि आप लोग एक इक्विपमेंट को बनाते हैं बेसिकली। अगर आप एस्पन हाइसिस यूज करें और एस्पन प्लस यूज करें तो आप देखेंगे कि उसकी लाइब्रेरी में पंप है, कंप्रेसर है, तो वो पंप और कंप्रेसर ऐसे नहीं ऐड हो गए, उसके पीछे उनकी डिजाइन इक्वेशंस हैं जिनको ऐड किया गया है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? मॉडलिंग कहेंगे। और जब आप उस पंप को यूज करके उस पे डिफरेंट फ्लो रेट्स पे एनालिसिस करते हैं या डिफरेंट फ्लो रेट्स पे डिफरेंट एफिशिएंसीज पे उसके रिजल्ट्स लेते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? सिमुलेशन। मींस द solution of a model is known as the simulation. A model of an equipment, unit operation, unit process, and the solution based on the provided parameters is known as simulation. In a simulation, models can be used to study existing or proposed characteristics of the system. For example, we have the boiler installed in our system. What we can do? We can build its model using a suitable simulation software, and then we can analyze the effect of various parameters. For example, the boiler feed water which is entering the boiler, we can vary its temperature to analyze the effect on the boiler efficiency. Similarly, the superheated steam produced from the boiler is used to run the turbine and generate electricity. So what we can do, we can analyze the effect of superheated steam, temperature and pressure on steam turbine efficiency. Similarly, as a thumb rule in industrial processes, usually the equipment is operated at 80% of the design. Means if the design is 60 bar, then the operation will be at 80% of the 60 bar, means will be operated at 48 bar or a maximum of 50 bar to keep it in safety limits. So you can also check that what is the effect if we go below 80%. Obviously you cannot do it in the real system, because if you do it in the real system, you are compromising on the production, you are compromising on the efficiency of the plant, you are compromising on the cost of the plant, which you cannot do in any case. Similarly, if you have to propose a system that you have to install an energy integration system, you want to recover heat from a system, then you have to use the simulation software. Because if you do not do that and you just install an equipment over there and then you find that the equipment is not suitable or the type should be changed, then you do not have the other resources to manipulate it as well. Let me explain you in Urdu a bit कि जब आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, बॉयलर लगा हुआ है, आपने उसकी एफिशिएंसी को वेरी करना है जी, बॉयलर की एफिशिएंसी को आप चाहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी आप अचीव कर लें। तो आप ये नहीं करेंगे कि प्लांट पे जाएंगे, बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर खुद से बढ़ा देंगे, या आप जाके जी स्टीम ड्रम का टेम्परेचर बढ़ा देंगे।
ठीक है, या आप राइसेस या जो आपका फ्यूल है उसकी क्वांटिटी को मैनिपुलेट करना शुरू, आप ऐसे ही डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, कुछ आप उस पर वर्किंग करके जाएंगे, लेकिन उससे आप क्या कर रहे हैं, प्लांट की सेफ्टी को पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, प्लांट की कॉस्ट पे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, प्लांट के ऑपरेशन को आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, प्लांट की प्रोडक्शन पे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सिमिलरली, आप अगर टरबाइन की बात करते हैं, तो आप इसी तरह से आप सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर ऐसे ही नहीं वेरी कर सकते कि आप देखना चाहें कि अगर 60 बार पे ऑपरेट करते हैं तो क्या टरबाइन की एफिशिएंसी आती है, 40 पे ऑपरेट करते हैं तो क्या, आप इस तरह से डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इस तरह से आप अपने प्लांट की एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आप सेफ्टी हैजर्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी जो आप हैजर्ड्स हैं उनको आप इंक्रीज करो, आप अपने सेफ्टी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर हो जिसपे आप टरबाइन का मॉडल बनाएं और आप उस पे ऑपरेशनल पैरामीटर्स को वेरी करके आप एफिशिएंसी को मॉनिटर कर सकें, और फिर उसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकें कि ये सेट ऑफ ऑपरेशनल पैरामीटर्स बेस्ट है मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं जब एंग्रो में काम कर रहा था, तो वहां पे दो राइस हस्क थे, एक ओल्ड राइस हस्क था और एक न्यू राइस हस्क था। ओल्ड का मतलब है जो कुछ पुराना हो चुका है, और न्यू का मतलब जो फ्रेश अभी आपको सप्लाई आ रही है, क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले एक मॉडल बनाया एस्पन में, और हमने न्यूराइसस की जो भी करेक्टरिस्टिक्स थी, जो उसके कैलोरीफिक वैल्यू और जो उसके कंपोजिशन, और ओल्ड राइसस, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें कितना मिक्स रख के चलाना है, क्योंकि डिमांड ये थी कि अगर हम न्यू राइसस सारा यूज कर लेते हैं तो ओल्ड इतना ओल्ड हो जाएगा कि फिर उसको यूज करना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप सारा न्यू यूज कर रहे हैं तो वो ओल्ड बड़ा बड़ा और ओल्ड हो जा रहा है, या अगर वो 5 दिन का तो फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन का हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उसमें फिर मिक्स रेशो निकाली कि हम कितने को कितने से मिक्स करें कि हमारी बॉयलर एफिशिएंसी पर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना आए। तो आपको इस तरह के डिसीजंस भी करने पड़ते हैं, तो ये डिसीजंस आप प्लांट पे जाके इस तरह से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई सिमुलेशन की मॉडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। या सिमिलरली, अगर आप कोई करेक्टरिस्टिक प्रपोज करना चाहते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से आप एनर्जी सेव कर सकते हैं, तो ये नहीं कि आपने हीट एक्सचेंजर ले आए और वहां पे जाके हीट एक्सचेंजर पे लगा दिया जी, हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने हमेशा सबसे पहले एक सिमुलेशन स्टडी करनी होती है, एक डिजाइन स्टडी करनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप सिमुलेशन में अप्लाई करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगना जरूरी है जो हीट को रिकवर कर सके, क्या वो हीट एक्सचेंजर इस काबिल होगा, या वो ओवर साइज तो नहीं है, या वो अंडर साइज तो नहीं है। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं वो आप मॉडलिंग सिमुलेशन से जो है वो एनालाइज या एवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है जी। So that's how you can use modeling and simulation to analyze the process and to recommend some changes in the process which are beneficial in terms of cost and in terms of energy. Now, purpose of modeling simulation that I have already told you that it solves a real world problem safely and efficiently. As you see, the word safely is written ahead of efficiently. First thing is that your plant should be safer. अगर आपका प्लांट सेफ्टी लिमिट्स को क्रॉस कर जाएगा तो कोई ना कोई खतरा है, ठीक है, जिससे आपकी इंसानी जानें जाया हो सकती है, दैट कैन लीड टू द लॉस ऑफ प्रेशियस लाइफ्स। इक्विपमेंट तो जाएगा ही, लेकिन इंसानों की जान भी जाया हो सकती है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप प्लांट पे जाके कुछ भी शुरू कर दें, ऐसा अलाउड नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैक स्टडी करनी पड़ती है। You have to have some basics of modeling simulation. You have to have some solved models on simulation software, and you have some analysis or results which you can present effectively. And first thing, safely, efficiently, and that should be cost effective. Provides an important method of analysis which is easily verified, communicated, and understood. That is the main thing, because the plant GM, general manager plant, or the head operations won't understand the process or will ask about your findings in terms of cost and energy, that how much cost is saved, how much energy is saved. So this simulation and modeling will provide you the in-depth analysis which you can easily verify, which you can easily communicate, and that can be easily understood. Now, it also depends on your capability as well कि आप लोग उस
कैपेबिलिटी पे कितना पूरा उतरते हैं। मॉडलिंग सिमुलेशन ने तो आपको एक रिजल्ट बना के दे दिया, आपने बड़ा अच्छा उस पर ऑपरेशन हायरार्की बना ली, सारी अपने ऑपरेशन स्कीम बना ली और आपने उसको सिमुलेट भी कर लिया। लेकिन अब ये उसके बाद आप पे है कि उसने जो आपको रिजल्ट दिया है उसकी बेस पे आप अपना एनालिसिस करें इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। और इवन मॉडलिंग सिमुलेशन के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे एस्पन हाइसिस है या एस्पन प्लस है, जो आपको कॉस्ट की टर्म्स में भी बेनिफिट देते हैं। बेनिफिट से मुराद ये है कि कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं कि कितनी प्लांट कॉस्ट लगेगी, कितनी फिक्स कॉस्ट लगेगी, कितनी कैपिटल कॉस्ट एंड सो ऑन, जो भी उसकी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है वो सारा आपको बता देगा। एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल सॉल्यूशंस बाय गिविंग क्लियर इनसाइट इनटू कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आपके जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं, दे आर नॉट सिंपल इन नेचर। Not a single distillation column is installed, multiple distillation columns are installed, and they may be different in nature. One may be simple column, one may be azeotropic, one may be extractive. So these complex system can be easily studied using modeling simulation technique, modeling simulation softwares, and you can get the maximum efficiency by using the data generated from the modeling simulation. And as I said earlier, you cannot simply go to the plant and run different schemes of operational ranges to check it, because in this case you are firstly compromising on the safety of the plant, secondly on the efficiency, cost and energy. So that is why you need modeling and simulation softwares, so that you can top up the problems of the plant. And one of the things that if you are having some problem in the plant, because as you may know that daily production, daily performance report of a plant is generated, so you can analyze the data that the efficiency of the system is same or decreasing. If decreasing, then why it is decreasing. So you can also use simulation software to provide the performance of the data on daily basis and to analyze the data as well. Similarly, when you do the performance, there is always 2 to 3 days in a calendar year for every plant where performance testing is carried out. And before doing that performance testing, the modeling simulation data is used, is generated, is built, is used to do the performance testing, staying in the safer limits. And obviously in that limits which is permitted by the design of this equipment. Or even you can propose the new design as well. What are the softwares which we use for modeling and simulation? There are a lot of them. Aspen HYSYS, Aspen Plus, ChemCAD, COMSOL Multiphysics for 3D analysis, ANSYS for 3D analysis, GPROMs in which you place equations in that and build your model. MATLAB, again the same as GPROMs, and many more. So in chemical engineering, usually we deal with Aspen HYSYS, Aspen Plus, and if we go for 3D, then COMSOL, ANSYS. If we have to generate a model, then usually GPROMs, MATLAB. In our course, we will deal with these two systems, these two models, Aspen HYSYS and Aspen Plus. And remaining, obviously, that's not part of our scope of this subject, but usually when you go to MS level or PhD level, then Aspen along with these softwares can be learned as well. So I have listed down some of the advantages in separate slides for your clear understanding of process modeling and simulation. Risk-free environment. As I have said, first thing which we always talk about is safety of personnel working over there. Safety of the equipment, safety of the personnel, because both are precious. It provides a safe way to test and explore what if scenarios. These scenarios are really important for the process operations, and it provides a safer way. What it means कि आप व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं कि अगर पीएसवी ब्लो कर जाती है, प्रेशर सेफ्टी वाल्व, तो क्या इफेक्ट आएगा सिस्टम पे। अगर आपके सडनली टेम्परेचर राइज कर जाता है स्टीम ड्रम, बॉयलर के अंदर स्टीम ड्रम का अगर टेम्परेचर सडनली राइज कर जाता है तो आप क्या स्टेप्स लेंगे।
अगर स्टीम ड्रम में टेम्परेचर राइज करता है तो ये एक डेंजरस इसमें पार्ट है, क्योंकि वो टेम्परेचर राइज करते करते या प्रेशर राइज करते करते इतना राइज कर सकता है कि वो एक्सप्लोड हो सकता है. लेट मी गिव यू an example that we were doing pressure testing of steam drum, and by mistake one of the operators increased the pressure of boiler feed water which is going to the steam drum. And what had happened due to a sudden rise in pressure, because the system was comparatively older in nature, a minor leakage type occurred in steam drum. That was a human mistake and wasn't analyzed before. So that resulted in a leakage which was although rectified at the later stages before the startup of the plant. But you see, that wasn't a safer way because he wasn't informed about that. I'm giving you just an example of it. So what you do, you have to first do the simulations to check what are the permissible limits and to what limit it can go. And if you go beyond that limit, then obviously your system have some of the disturbances which may result in some leakages and so on. For example, there is an example that the effect of changing staffing levels in a plant may be seen without putting production at risk. For example, आपके पास प्रोडक्शन प्लांट है, कोई भी राइस प्रोसेसिंग का या आपके पास अमोनिया प्रोसेसिंग का, और आपने 100 ऑपरेटर रखा हुआ है. तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं उस 100 को 70 कर दूं, 3 शिफ्टों की बात करूं क्योंकि नॉर्मली शिफ्ट चलती है प्लांट पे, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट, और टोटल मिला के आपके पास 100 बंदे हैं, और उस 100 को अगर आपने 70 पे करना, अब आप ये नहीं करेंगे कि आप एक्चुअल टाइम उसको 70 कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे कोई डिजास्टर क्रिएट हो जाए अगर आप 70 करते हैं. तो पहले आप ये देखेंगे कि आप बैटरी लिमिट्स डिसाइड करेंगे. बैटरी लिमिट ये होता है कि आप बता दें कि ये एरिया इतना इस ऑपरेटर के पास जाएगा, इतना एरिया इस ऑपरेटर के पास जाएगा, वो उसकी डोमेन में नहीं जाएगा, वो उसकी डोमेन में नहीं जाएगा. अब आप क्या करेंगे, अब आप बैटरी लिमिट्स को बढ़ा देंगे. अगर 100 ऑपरेटर्स हैं तो इसका मतलब है बैटरी लिमिट स्मॉल थी. अब आपने क्या किया, आपने बैटरी लिमिट्स को या जो वो एरिया है वो बढ़ा दिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पहले बैटरी लिमिट थी. आप देख लें कि दो दो ऑपरेटर, 1 2 3 4 5, तो टोटल 10 ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहे थे. अब आप क्या करेंगे, अब आप इस बैटरी लिमिट को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, इस बैटरी लिमिट को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, और इस बैटरी लिमिट को उठा के आप यहाँ पे ले आएंगे. तो उससे क्या होगा, अब आपके ऑपरेटर रह गए 8, यानी आपने 2 ऑपरेटर कम से कम रिड्यूस कर लिए. तो अब आप उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो मैंने बैटरी लिमिट को इतना बढ़ाया है, तो क्या ये जो 2 ऑपरेटर मेरे पास इस शिफ्ट में थे, क्या वो दोनों ऑपरेटर काम आसानी से कर सकेंगे? अगर खुदा ना ख्वास्ता इमरजेंसी सिनेरियो आता है तो क्या वो उस इमरजेंसी सिनेरियो में को कॉप अप कर सकेंगे? नहीं, बिकॉज you are really interested with the emergency scenarios. First thing which you will do while doing the staffing level in a plant, that you will consider the emergency scenario. नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा हो कोई इतना मसला नहीं होता, नॉर्मली आपका काम चलता रहता है, लेकिन जब इमरजेंसी सिनेरियो आता है तो वो एक हैपहैजर्ड टाइप सिचुएशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन भी आज उसको आप कह सकते हैं, या एक बहुत घबराने वाली सिचुएशन आ जाती है. उसमें आपने क्या करना होता है, आपने बहुत कंट्रोल रख के अपने आप को सिचुएशन को हैंडल करना होता है. तो क्या उस बैटरी लिमिट को बढ़ाने से क्या वो 2 लोग उसको संभाल सकेंगे, या अभी भी आपको 4 लोगों की जरूरत है? इस तरह की जो चीजें हैं ये आप मॉडलिंग सिमुलेशन से आप जज कर सकते हैं. ऑब्वियसली उसके लिए ये वाले सॉफ्टवेयर यूज नहीं होंगे, कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं. सिमिलरली you can, what if scenario, for example I am giving you an example of my plant where I was working, that paddy processing was taking place and rice husk was producing and was thrown to the, or was supplied to the rice husk facility. Now rice husk was fed to the boiler using conveyors, and what if that conveyor fails? And that has happened to me as well, that in the scenario where the conveyors failed to supply rice husk, we have to shut down the plant, we had to shut down the boiler, we had to shut down the turbine, we had to shut down the cooling towers, and we had to turn on the diesel generators. So this what if scenario
can also be studied using the simulation softwares. Obviously, as I have said, that the different simulation softwares are used for this, but what if scenarios can be established using Aspen as well, and make the right decision before making real world changes. This is not the one time decision. What I am saying, trying to say is कि आप लोगों ने एक एनालिसिस करके डिसीजन नहीं ले लेना. Only one analysis is not sufficient. You need a lot of analysis to justify that this proposed change is now suitable. And obviously, you are not alone, or a single person cannot decide it. There is a team of process engineers which decide that the particular decision is to be taken or not, or the proposed change is feasible or not. So, your first task is to make sure that your environment is risk free and there are no hazards involved while making any changes to the plant, either in terms of operating personnel or in terms of the equipment installed or anything. The second thing is the save time and money. Obviously, time is money. If you save the time, you are saving the money, or in other words, as well. Now, virtual experiments with simulation models are less expensive and take less time than experiments with real assets. What I'm trying to say is, आपके पास एक प्लांट है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं निमर प्रोडक्शन सेटअप में था. तो अब आप चाहते हैं कि आप एक नया प्लांट लगाएं वहाँ. तो आपके पास दो ऑप्शंस है. या तो आप सबसे पहले उसका पायलट प्लांट लगा लें और पायलट प्लांट लगा के उस पर टेस्टिंग कर लें, और फिर आपको पता चले जी पायलट प्लांट पे तो वो आपको जो आप डिजाइन करने जा रहे हैं वो मीट नहीं हो रहा, आपको दूसरा पायलट प्लांट चाहिए होगा, तो फिर आप दूसरे पायलट प्लांट की तरफ जाएंगे, एंड सो ऑन. तो इस तरह से आप पैसे भी जाया कर रहे हैं, वक्त भी जाया कर रहे हैं. उसका बेस्ट फिजिबल क्या है कि अगर आप एक नई चीज लगाने जा रहे हैं या आप एक चीज प्रपोज करने जा रहे हैं, तो अगेन आप उसका मॉडल बनाएं सिमुलेशन में और जितनी मर्जी टेस्टिंग करें. क्योंकि देखिए, जब आप पायलट प्लांट पे टेस्टिंग करेंगे तो आपको कोई ना कोई फ्यूल चाहिए उस सिस्टम को चलाने के लिए, तो आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी. उसकी मेंटेनेंस की तो अगर हम बात ना भी करें इस टाइम पायलट प्लांट की, लेकिन जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो पड़ेगी, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है वो वहां पे होगी. सिमुलेशन में क्या करेंगे आप, सिमुलेशन का मॉडल बना दिया आपने, उसी पायलट प्लांट को आप सिमुलेशन में ले गए, आपने पूरा एक मॉडल उसका बिल्ड कर दिया. अब आप वहां से एक टेम्परेचर को वेरी करें या वहां से आप फ्यूल को वेरी करें. अब एस्पन के अंदर अगर आप फ्यूल को वेरी करें, उसका आपको कोई चार्ज तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप रियल टाइम फ्यूल को वेरी करेंगे तो आपको परचेज करना पड़ेगा बार बार वो फ्यूल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नया बॉयलर ही लगा रहे हैं और आप नेचुरल गैस को यूज कर रहे हैं, तो आप पायलट प्लांट पे क्या करेंगे, आप नेचुरल गैस की सप्लाई दिए रखेंगे, तो नेचुरल गैस भी जाया होगी, आपको आपकी प्लांट की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, आपका टाइम भी जाया होगा. मतलब टाइम इन टर्म्स के, अगर आपका सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं होगा या आपको बहुत देर बाद आपके पैरामीटर्स मिलेंगे, तो उससे बेहतर ये है कि आप उस बॉयलर का मॉडल उसके रेलिवेंट सॉफ्टवेयर में बनाएं और आप उस पे जो भी आपने चेंजेस वगैरह करनी है वो करें. क्योंकि उस केस में आपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर तो परचेज किया होगा, उसकी तो एक कॉस्ट है, लेकिन जो बाकी कॉस्ट है, जैसे नेचुरल गैस बहुत एक्सपेंसिव है, ऑयल एक्सपेंसिव है, कोल एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव फ्यूल्स हैं, ये सस्ते तो नहीं मिलते. तेल चाहे 2 रुपए का हो इंडस्ट्री के लिए तो वो महंगा ही है. अगर उस आप 2 रुपए भी बचा के दे रहे हैं तो इंडस्ट्री को उसका फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ मिलियंस ओवर अ ईयर एज वेल. तो इसलिए आप मॉडलिंग सिमुलेशन करते हैं ताकि आप टाइम को बचा सकें और पैसे को बचा सकें. पैसे को कैसे बचाया आपने, कि आपने मॉडलिंग सिमुलेशन में मॉडल बना लिया और उस मॉडल की बेस पे आपने डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट कर लिए, वही रिजल्ट्स जो आपने पायलट प्लांट की बेस पे जनरेट करने थे. अब जब आपने पायलट प्लांट की बेस पे वो रिजल्ट जनरेट करने थे तो आपको एक्चुअल टाइम फ्यूल देना पड़ना था, तो उसकी भी एक कॉस्ट बढ़नी थी. लेकिन जब आप मॉडलिंग सिमुलेशन में करेंगे तो आप सिर्फ वहां पे बैठ के पैरामीटर एक वेरी करेंगे और उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको आपके पूरे उस बॉयलर का सेटअप का पता चल जाएगा कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रही हैं और क्या क्या चेंजेस रिकमेंडेबल हैं और क्या चेंजेस रिकमेंडेबल नहीं है. सिमिलरली अगर आप लैब स्केल पे बात करें तो आप बजाय एक पायलट प्लांट या लैब स्केल का कोई ऑपरेशन करने से बेहतर है कि आप एक सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर रन करके वही रिजल्ट्स आप अचीव कर लें. टाइम बचेगा, क्योंकि जो काम आपने
उधर 10 दिन में करना था वो काम हो सकता है यहाँ 7 दिन में या 8 दिन में हो जाए, तो आपको 1-2 दिन का तो मार्जिन उसमें सेव होगा। तो इसलिए प्रोसेस मॉडलिंग और सिमुलेशन जो है वो यूज होती है इंडस्ट्री में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ताकि आप टाइम को बचा सकें और पैसे को बचा सकें। Marketing campaigns can be tested without altering the competition or unnecessary spending money. Visualization, as I have told you earlier, that we use different softwares for modeling simulation, among which I have told that for 3D analysis, COMSOL and ANSYS are used. So the third point is related to the visualization, that we can view various models of reactors for distillation columns in 2D, 3D views as well. And we can get the concepts and ideas so that we can easily verify these, that can be easily communicated and understood. Obviously, जब आप डिस्टिलेशन कॉलम आप डिजाइन करते हैं और जो डिजाइनिंग कंपनीज होती हैं वो प्रॉपर उसकी 3D टेस्टिंग करती हैं या 3D मॉडल्स उसके प्रिपेयर करते हैं कि अकॉर्डिंगली किस तरह की शेप होगी प्लांट की, अगर आपने एक पूरा प्लांट उनसे बनवाना है, या फिर कौन से इक्विपमेंट कहाँ पे इंस्टॉल होगा। जब आप एक प्लांट की साइट पे विजिट करते हैं तो प्लांट साइट विजिट करने के बाद आप ऐसे ही नहीं डिसाइड कर लेते कि बॉयलर यहाँ लग जाएगा, टरबाइन यहाँ लग जाएगी, कूलिंग टावर वहां लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप प्रॉपर उसकी साइट की फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि कौन सा पॉइंट किधर लगेगा, कहाँ से आपकी नेचुरल गैस की सप्लाई आएगी, कहाँ से आपकी कूलिंग वाटर की सप्लाई आएगी, फ्रॉम वेयर यू विल गेट रॉ वाटर सप्लाई, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द अदर सप्लाईज एज वेल। And similar for, obviously you will get steam supply, and you will decide that at this location you will install the boiler based on the size. And obviously the visualization can be easily viewed using the simulation softwares, that you visualize the installed equipments. For example, what will you will do, you will draw, let me draw this for you, that for example you have brought this vicinity a bit not straight, but anyhow. So you will see this is the complete land of this plant. So you will visualize that the boiler is installed over here, and you will do it using a simulation based on the total area, that the total area of the boiler. Similarly, you will check that where turbine will be installed. Obviously, it will be near to the boiler, because if you install turbine over here, that boiler at one end and turbine at one end, so what you will do, a lot of piping, a lot of pressure drop, a lot of temperature drop. And even if you install the insulation, that the pressure drop will be there, but your piping cost will be increased. And similarly, if you install the condenser over here from which the steam is going to the condenser, so that is an haphazard placement of the equipment. So you can visualize the 2D 3D movement over here by using a suitable software, by installing the इक्विपमेंट एट द प्रॉपर प्लेसेस। मतलब ये है कि आपने बॉयलर इधर लगा लिया, उसके बाद आप असेस कर लेंगे कि कितनी पाइपिंग और लगेगी, उसके अकॉर्डिंगली तो आप टरबाइन लगा लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली कितनी पाइपिंग लगेगी, मिनिमम पाइपिंग, बिकॉज आप बेहंगम तरीके से कॉस्टिंग को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आप इतनी कॉस्ट नहीं लगा सकते किसी भी प्रोसेस में कि आपकी पाइपिंग कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि पाइपिंग कॉस्ट भी एक कॉस्ट है। जिस तरह आपकी इक्विपमेंट कॉस्ट है, तो उस तरह से पाइपिंग की भी एक कॉस्ट है, फिर उसकी मेंटेनेंस की भी कॉस्ट है, क्योंकि अगर कहीं पे भी उस पाइप से लीकेज हुई तो आपको वो पाइप को ब्लॉक करना पड़ेगा, और जितना लंबा पाइप होगा, जितना उसकी लेंथ होगी, उतने ही आपके मेंटेनेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो आपकी विजुअलाइजेशन है, ये भी आप इन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से अचीव कर सकते हैं। Analysts and engineer gain trust in model by seeing it in action and can clearly demonstrate findings to the management. जब, जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा कि आपकी जो अवेलेबल साइट है उसका जायजा लिया जाता है, उसको असेस किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है यूजिंग these simulation softwares. एंड आफ्टर डिजाइनिंग, ऑब्वियसली पहले आपका काम है कि आपने सिमुलेशन से उसको डिजाइन कर लिया, मॉडलिंग सिमुलेशन से, फिर आपने एक सर्टन सूटेबल सॉफ्टवेयर यूज करके आपने
प्लांट का लेआउट बना लिया कि प्लांट का लेआउट क्या होगा, और उस लेआउट में जो कि आपके पास हर इक्विपमेंट का अवेलेबल एरिया मौजूद है कि कितनी एरिया पे वो लगेगा, और ऑब्वियसली उसका आप परसेंटेज एक्सेस रखते हैं ताकि शॉर्टेज ना हो जाए या कोई इक्विपमेंट में मसला ना हो जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट कर देते हैं कि बॉयलर इधर है, टरबाइन इधर है, स्टोरेज टैंक्स इधर होंगे, कूलिंग टावर इधर होगा, डीजल जनरेटर इधर होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप विजुलाइज कर सकते हैं। इनसाइड इनटू डायनामिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, दैट यू वांट टू study the system dynamically. Currently, I was talking about the steady state system that we have achieved it. We have run the plant. Plant is at steady state, normal operations. But in actual case, it's not steady state. It's dynamic. It's always dynamic. Maybe with minor change or maybe with major change. Unlike spreadsheet or solver-based analytics, simulation modeling allows the observation of system behavior over time at any level of detail, minor level, that what is happening in a second, what is happening in the minute, what is happening in the hour. So this type of minimum to maximum detail, or what is happening in a day or a month and so on. For example, I am giving you the example of distillation column dynamics, that an operation is going on and all of a sudden the flow rate to a distillation column increases. That then what will happen? How the controllers will manipulate and how the controllers will adjust so that the operation of distillation column remains undisturbed. This is the basic requirement. क्योंकि अगर आपका प्लांट सेंसिटिव है, और सेंसिटिव होने का मतलब ये कि थोड़ी सी चेंज भी से भी प्लांट में बहुत अब्रप्ट चेंज आ जाती है, तो ये एक पुअर कंट्रोल की निशानी है. दिस इज द पुअर कंट्रोल if your plant observes major changes with minor modification. It means your control system is inefficient. So you can even design your control system using simulation softwares, because in real time, in real world, control loops are installed. Your system is controlled. The control is necessary, because if you do not install control over here, again, your environment is not risk free. Your environment is risky because you haven't installed the proper control structure over here. And with the absence of proper control structure, just with an example of distillation column के फीड फ्लो रेट के चेंज होने से आपके सिस्टम पे बहुत अब्रप्ट चेंज आ गई, या फीड फ्लो रेट के डिक्रीज या इंक्रीज होने से, या फीड की जो कंपोजिशन है, क्योंकि इमरजेंसी सिनेरियोज में ऐसा हो जाता है कि आपके फीड के फ्लो रेट चेंज हो रहे हैं या फीड की कंपोजिशन, लेकिन आपके कंट्रोल लूप्स इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि आप उनको हैंडल कर सकें या मेजर चेंज ना आ सके, कि अगर पीछे से मेजर कोई फील्ड में चेंज आई है तो उसका इम्पैक्ट मिनिमम हो, लेकिन अगर मिनिमम चेंज से मैक्सिमम चेंज आएगा तो इसका मतलब है आपका कंट्रोल जो है वो बिल्कुल पुअर है. तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर कंट्रोल स्ट्रक्चर अप्लाई करें, और उसको अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपका जो कंट्रोल की जो सिलेक्शन है, कंट्रोल का जो डिजाइन है, वो इफेक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए भी आप सिमुलेशन का सहारा ले सकते हैं. यू कैन यूज सिमुलेशन सॉफ्टवेयर टू डिजाइन द कंट्रोल सिस्टम और द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. So what we have discussed right now, till now, we have discussed that you can design using simulation. You can draw a plant layout using simulation. You can decide the placement of equipment in that plant layout using simulation. You can design the control dynamics, the control structure of an equipment of a plant using simulation. So what left? You can increase the accuracy. A simulation model can capture many more details than an analytical model, provided increasing accuracy and more precise forecasting. That you can even forecast that what will happen if this is forecasting is again similar to the what if analysis. And however, the accuracy is linked with proper simulation solution. This is the main thing. For example, let me give you an example that we had discussed, that for gases or for hydrocarbons,
Tank Robinson is used. If you use NRTL over here, the other properties means the activity coefficient instead of equation of state, the results will be inaccurate. Your forecasting will be inaccurate. You cannot predict the true behavior of the system. The accuracy will be extremely poor or dead because you have done the simulation solution extremely wrong. So that is why the proper simulation solution is required, and that is required for all 5 parameters. That प्रॉपर सिमुलेशन होनी चाहिए आपकी, उसका सोल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, और सबसे पहले आपके कंपोनेंट जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, जो आपने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी पैकेज सिलेक्ट किया है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी ये चीजें अप्रोप्रिएट नहीं होंगी, अगर आपकी चीजें प्रॉपर नहीं होंगी तो जो मर्जी आप कर लें, आपका डिजाइन भी गलत है, आपकी प्लांट लेआउट तो चले आपने ड्रॉ कर ली, लेकिन उसके अंदर जो प्लेसमेंट होगी, क्योंकि आपका डिजाइन गलत है तो वो प्लेसमेंट भी गलत होगी, आप जिसके ऊपर कंट्रोल लूप लगाएंगे वो भी गलत होगा। तो ये सारी चीजें आपकी एक्यूरेसी भी आपकी गलत होगी। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा जब आप ये कोर्स को पढ़ेंगे आगे इस सेमेस्टर में, कि आपने सबसे पहले तो प्रॉपर सिलेक्शन करनी है प्रॉपर्टी पैकेजेस की। उसके बाद आपने प्रॉपर इक्विपमेंट सिलेक्शन करनी है कि कौन सा इक्विपमेंट वहां पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक रिएक्शन हो रहा है तो आप तो वहां पे कौन सी टाइप ऑफ रिएक्टर लगेगा, प्लग फ्लो लगेगा, CSTR लगेगा, या मेम्ब्रेन रिएक्टर लगेगा। फिर आपका ये काम उसमें ये देखना है कि वो इक्विपमेंट अवेलेबल है एसपन की लाइब्रेरी में कि नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हम ये देखेंगे कि उसको डिजाइन कैसे करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो डिजाइनिंग का पार्ट है जो कि एसपन कस्टम मॉडलर से है, यानी जिसमें मॉडल डेवलप करना या जी प्रॉम से जो मॉडल डेवलप करना है, ये हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद हम एक सिस्टम को डिजाइन करेंगे। एक उसका शॉर्टकट डिजाइन होगा, एक उसका रिग्रेस डिजाइन होगा, जैसे मैंने आपसे डिस्कशन में बात की। और उस डिजाइन की बेस पे हम जज करेंगे या डिजाइन करेंगे एक इक्विपमेंट को। डिस्लेशन को डिजाइन कर लिया, फिर ये तो हमारा BS लेवल तक का पार्ट है। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बात करते हैं कि जब हमने एक डिजाइन कर लिया, उस डिजाइन के अकॉर्डिंगली हम उसको प्लांट लेआउट में फिक्स कर देते हैं कि इतनी अवेलेबल एरिया में कौन सा एरिया जहां पे ये डिस्टिलेशन कॉलम लग सकता है, कितनी हाइट तक लग सकता है, और क्या उसकी डायमेंशंस जो भी है। और उसके कोरेस्पॉन्डिंगली फिर जब आपका डिजाइन सही होगा तो आपका कंट्रोल सही होगा। अगर आपके डिजाइन में मसले हैं तो आप अपनी तरफ से अच्छा भी कंट्रोल लगा लेंगे, वो कंट्रोल उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता क्योंकि आपके डिजाइन में मसले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कंट्रोल भी लगा लिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सके क्योंकि आपके पीछे डिजाइन के मसले हैं, तो आपका वो डायनामिक्स जो है, वो डायनामिक सॉफ्टवेयर जो है, जो कि बेसिकली एसपन प्लस डायनामिक्स है, वो आपको कोई ना कोई वार्निंग देता रहेगा, कोई ना कोई फॉल्ट निकालता रहेगा, या आपके जो फाइनल उसमें जो भी कंपोजिशन आएंगी वो मैच ही नहीं करेंगी जो भी आपकी रिक्वायर्ड कंपोजिशन से है। तो इसलिए ना आपके सिस्टम में एक्यूरेसी होगी, ना आपके सिस्टम में प्रॉपर कंट्रोल होगा, ना आपके सिस्टम का प्रॉपर डिजाइन होगा, अगर आपने स्टार्ट ही गलत किया होगा। ठीक है जी, तो ये है लेक्चर नंबर 1 का पार्ट बी। जो हमारा पार्ट सी है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी पैकेज से रिलेटेड है, तो उसको फिर नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच।